गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मित्रों, युगों युगों से प्रभु रामचंद्र का चरित्र, उनका कर्तृत्व, उनकी राज्य शैली चिंतन का विषय रहा है, प्रेरणा का विषय रहा है, जिस पे महान संतों ने, विचारकों ने, कवियों ने अपना अपना मत विभिन्न रचनाओं में प्रस्तुत किया। चाहे वो शतकों पूर्व के संत तुलसीदास जी हो, कवि रहीम हो, संत रामदास स्वामी हो, या 21वीं सदी के आदरणीय संत पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी हो। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के गुरु संत रामदास स्वामी ने तो सारी मैनेजमेंट ही अपने ग्रंथ दासबोध में 700 वर्ष पूर्व लिख छोड़ी है, जिसकी प्रेरणा का केंद्र बिंदु राम राज्य ही है। फ्रेंड्स, टुडेज सब्जेक्ट इन शास्त्रार्थ इज राम राज्य एंड इट्स रिलेवेंस इन द प्रेजेंट एरा. The moment we say Ram Rajya, the element of management is very, very relevant. And to throw light on this subject today, we have with us a very learned personality, Dr. Ashutosh Paturkar, who is a professor and head of the department at Dr. Ambedkar Institute of Management Studies and Research. He received his master's degree at Yashwantrao Chauhan, Maharashtra Open University, and PhD from Nagpur University. He has also authored the book 5 Elements of Organizational Excellence. Internationally well-traveled management guru, who is also a professional management teacher to various universities and the reputed corporates, is going to enlighten us on today's topic. Our today's moderator is Yogacharya, Sri Arvind Lundeji, who is also a regional mentor for the change at Atal Innovation Mission under Niti Aayog. He is also a yoga guru and Sanskrit scholar. He has dedicated his life for the bringing positive changes in education system and society. So friends, I hand over the mic to Dr. Ashutosh Paturkar, who is going to throw a light on today's topic, Rama Rajya and its relevance in present era. Thank you. नमस्कार। प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में नतमस्तक हम सभी हैं। आज का विषय बहुत ही प्रासंगिक है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस विषय के ऊपर आज बहुत कुछ चिंतन मनन किया जा रहा है। पूरी देश की नहीं तो विश्व की व्यवस्था में जो उठक पटक चल रही है, जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार के बवंडर आ रहे हैं। इंसानियत और इंसान, इन दो शब्दों के अंदर ही मानो सारा विश्व समेटता जा रहा है और इससे संबंधित फिर कई अनेक समस्याएं हैं। वो सब आज के विषय नहीं है, लेकिन इस सब को किस ढंग से ठीक किया जाए, उसके लिए क्या टूल हो सकता है, क्या आयाम हो सकता है, वही आज का विषय, ऐसा मेरा मानना है। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, 3 मिनट में एक विषय रखना चाहता हूँ आप सबकी अनुमति से। अगर राम राज्य को समझना है तो पहले राम को समझना होगा। मूलतः राम को आप दशावतार में मान ले, ईश्वर अवतार माने, लेकिन श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ अगर नायक है इतिहास में, तो मर्यादा के अंदर रहने वाला नहीं, मर्यादा को परिभाषित करने वाला यह एक नायक है और इसलिए हम उनको जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है? समस्त उदाहरण है। सौतेली माँ एक अपना अधिकार अपने पति से मांगती है और सौतेली माँ ने मांगा हुआ अधिकार पालन करने के लिए उसका यह सौतेला पुत्र 14 वर्ष वनवास में जा रहा है। संपूर्ण अयोध्या नगरी अपने घर दरवाजे, धंधा काम धंधा बंद करके राम सीता लक्ष्मण के पीछे वनवास में चले हैं। कुछ दूर चलते हैं, अंधकार हो जाता है, रात गुजरती है, सब लोग सो जाते हैं और अंधेरे में ही प्रभु श्री राम, सीता माई और लक्ष्मण निकल पड़ते हैं। पत्थर के ऊपर लिख कर जाते हैं कि अगर आप सही में मुझे प्रेम करते हैं तो कृपा कर अयोध्या वापस जाइए। देखिए यहाँ पर चरित्र नायक हमारा कैसा है।
अगर हम कहेंगे कि सौतेली माँ, तो आगे देखिए एक शत्रु है रावण। रावण को कहते हैं कि भाई त्रिलोकों का स्वामी था, प्रखंड ये था। उस राम के ऊपर विजय प्राप्त करने के उपरांत उस शत्रु को जो रामचंद्र जी जो एक व्यवहार दे रहे हैं, उसको जो बता रहे हैं, लक्ष्मण को जिस प्रकार के समझा रहे हैं, तो उस रावण को भी मृत्यु प्रांत जो आदर दे रहे हैं वे श्री राम। राम के कितने गुणगान गाएं। तीनों लोगों का साम्राज्य उनके हाथ में था। आप जानते हैं तीनों लोग, अयोध्या, किष्किंधा और लंकापुरी, तीनों राज्य उनके हाथ में आ चुके थे। अगर आज के किसी भी शासक को हम सामने रखें तो हम नहीं कह सकते कि इसमें से एक भी शासक उस प्रकार व्यवहार करता। विश्व का, मैं भारत का नहीं कह रहा हूँ, विश्व का कोई भी शासक। और प्रभु रामचंद्र कहते हैं, यद्यपि स्वर्णमयी लंका मया न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिसी। ऐसे ये सर्वश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये वो तीनों लोगों के स्वामी होने के बावजूद भी और 3 राज्यों के अधिपति हो सकने की अवस्था में आने के बावजूद भी निष्कांचन निस्पृहता का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और अपनी जन्मभूमि जो है उसकी शरण में जा रहे हैं। राम को देखना है तो आज की तारीख में, अभी हम लोग सब जानते हैं, आप सब तो बहुत अधिक विद्वान हैं और सब जानते ही हैं कि राम के चरित्र के ऊपर नहीं, परंतु रामचरितमानस के आधार पर कुछ विवाद खड़े करके समाज में कुछ प्रकार के, हम कह सकते हैं कि हंसने से भी ऊपर अगर कोई शब्द हो तो आंखों में आंसू ही आ जाए हंसते हंसते, इतनी मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं। वो राज्य कौन सा था, वो काल कौन सा था, उसमें परिभाषाएं क्या थी, उसमें जीवन यापन की क्या पद्धतियां थी, इस किसी का विचार न करते हुए केवल राज्य के लिए ही सारा चल रहा है। और ऐसे राज्य के अधिपति जब आएंगे तो राज्य का क्या हाल होगा, यह अगर समझना है और वह न हो उसके लिए क्या उपाय है, उसके लिए आज का विषय है राम राज्य वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना मार्गदर्शन शुरू करें। धन्यवाद। क्षमा करें, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2-3 दिन से बीमार हूँ, बैठ के बोला, आप सबसे मैं पहला क्षमा मांगता हूँ। सभी आदरणीयों को प्रणाम और नमस्कार। लोढ़ा साहब ने जब मेरे को बोला था कि आपको रामायण के ऊपर में बोलना है, तो मैंने कहा था सर मैं तो सिर्फ पढ़ता हूँ, और उन्होंने कहा था कि नहीं, आपको राम राज्य के ऊपर में और उसके ऊपर भी राम राज्य का अभी का रिलेवेंस क्या है ये बताना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं रामायण को एक विद्यार्थी करके ही पढ़ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं रामायण पूरी तरह से जानता हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो भी मैनेजमेंट के हिसाब से, मतलब मैनेजमेंट कैसे था क्या था, इसी हिसाब से मैं रामायण की तरफ देख रहा हूँ। और जो संदर्भ मैंने लिए हुए हैं वो भी केवल वाल्मीकि रामायण के हैं, और वाल्मीकि रामायण जो है ये युद्ध कांड तक ही रहा है, उसके आगे नहीं रहा है। अब मैं बहुत सोचता था कि जब हम लोग कहते हैं कि राम राज्य, तो इसकी संकल्पना क्या थी, और कहीं पर इसका कुछ उल्लेख रामायण में आता है क्या, यही मैं देख रहा था। क्योंकि हमेशा लोग कभी भी कहते थे तो राज्य कैसा होना चाहिए, तो राम राज्य होना चाहिए, यही कहते थे। लेकिन राम राज्य मतलब क्या, और खुद प्रभु रामचंद्र की क्या कल्पना थी राज्य के बारे में जिसे हम राम राज्य कह सके, इसके ऊपर में भी मैं कुछ संदर्भ देख रहा था। तो ये सिर्फ वाल्मीकि रामायण में मिले थे, बाकी रामायण में भी उसका उल्लेख है, लेकिन मेरा जो ज्ञान है वो वाल्मीकि रामायण तक ही सीमित है। बाकी रामायणों के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। और दूसरा ये कि वाल्मीकि रामायण ये केवल युद्ध कांड तक ही है, और उत्तर कांड जो है उसका उल्लेख बाद में किया गया है। बहुत से लेखकों का ये भी कहना है कि उत्तर रामायण वाल्मीकि ने नहीं लिखा, उसको बाद में ऐड किया गया, कुछ हेतुवश उसे ऐड किया गया, ये बहुत लोगों का कहना है। तो मेरा जो अभ्यास है वो युद्ध कांड तक ही मर्यादित रखा हूँ। अब जब हम राज्य की बात करते हैं या राम राज्य की हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक राज्य होगा, उसमें राजा होगा, मतलब किंग होगा। अगर किंग है तो आर्मी भी है, आर्मी है तो एक कैपिटल है। हम लोग लगा सकते हैं प्लीज।
ये एक संकल्पना है, मतलब आर्मी रहेगी, फिर कैपिटल रहेगी, फिर उसमें मिनिस्टर्स रहेंगे, फोर्ट्स रहेंगे, किले रहेंगे, रिसोर्सेस रहेंगे, फार्मिंग रहेगा, सिटीजन्स हैं, अदर स्टेट्स हैं, मतलब नेबरिंग स्टेट्स जो है वो है, जस्टिस है, आउटलॉ है और एनिमी है। तो ये सबके प्रति प्रभु रामचंद्र जी की क्या कल्पना थी, ये मैं बताना चाहता हूँ। अब वाल्मीकि रामायण में जब इसका उल्लेख आता है तो हम लोग जब भी वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि भरत भेंट हुई थी, भरत का और राम का मिलाप हुआ था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी और उसी में राम राज्य का जो उल्लेख है वो आता है। तो हम लोग देखते क्या है कि मैंने जो पढ़ा है वो मैंने मराठी में पढ़ा है, संस्कृत में नहीं पढ़ा, मराठी में पढ़ा है। तो ट्रांसलेशन में कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो दोज हू डू नॉट एक्सप्रेस द सेंटिमेंट्स ऑफ व्हाट महर्षि वाल्मीकि हैड सेड. So that is my limitation. It is not the limitation of who wrote Ramayana, but it is my limitation. I read it in Marathi and then translated it into English. So there is a probability that some sentiments possibly could be lost. Now when Bharat met Ram for the first time, it was at the Chitrakoot, because Bharat was staying with his maternal uncle when Ram was sent to Vanvas. And Bharat, when he came back, he realized that Ram has gone to Vanvas, and he went to Chitrakoot to bring him back. And there exactly starts what is the concept of Ram Rajya. The first question that Prabhu Ramchandra asked to Bharat was about the king Dashrath. He said that it is virtually impossible that you can come to meet me in the forest if the Dashrath is alive, King Dashrath is alive. He's not addressing him as a Pitashri, he's addressing as a King Dashrath. So that was the first time he says that I doubt whether he's alive or he's not alive. Because had he been alive, he would not have come to forest to meet me. That's the first thing. So he inquires about what is the well-being of King Dashrath. Then he asks about Maharshi Vasishtha. And there are certain adjectives which are used in Ramayana, and they are very, very important. What he talks about Vasishtha is dharma abiding. That is one who is following the dharma, luminous, so Tejasvi, conscient. His Ikshvaku family is high priest and Brahmarshi Vasishtha. So that is the second person about whom Ram is asking. And then he asks about Kausalya and just mentions how is Kausalya. The first thing that he asks. And then when he asks about Sumitra, that is mother of Lakshman as well as Shatrughna, he says audacious son's mother. That means Uttam Putra. Uttam Putron ki jo janani hai, wo Sumitra kaisi hai. And he then says Godizn. That means godly. Devi Kaikai kaisi hai. मतलब देखिए, आप अभी जैसे आपने बताया था कि कई स्टेप मदर थी, सावत्र माता, सौतेली माँ थी उनकी, उसके बाद में भी उन्होंने उनके बारे में जो कहा है वो देवी ही कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कैसी है करके। और प्रश्न ये है कि इज शी हैप्पी, क्योंकि दो चीज़ें थी, एक राजा दशरथ शायद नहीं रहे थे और दूसरा ये था कि हो सकता है कि वो अभी भी खुश ना हो, तो वो खुश है कि नहीं है। दैट इज द first three things that he asked. And then he asked that because you are very young, have you lost the kingdom? So he's thinking about the kingdom also. Have you lost the kingdom because you are young? Young by virtue of experience, young by virtue of age, young by virtue of administration. All these things, his first question is, have you lost it? And then he asked certain personal questions, what qualities a king should have, and what statesmanship qualities a king should have. And based on these, we will see that what kind of Ram Rajya one can really expect. So he asks, do you felicitate the priests who are born in best pedigree? उत्तम कुल में जिनका जन्म हुआ है, उनका आप सम्मान करते हो कि नहीं? Courteous, Plugadulous, that is बहुश्रुत, जिनको बहुत लोग जानते हैं, ऐसे जो पंडित हैं उनके, undisgraced, and who follow Zilophic dharma. Once we were discussing on this same very platform whether dharma or is a science or an art, and that time the answer is what is written in the scriptures is the science, and following that or executing that is the art.
So the Zalophonic dharma is Shastrokta dharma. That is what these priests follow. And simpler Tempian Brahmin who understand oblation with cherishing, मतलब उनको विद्यावान भी है, with cherishing है, बुद्धिमान है, and they do they promulgate you? आपको एडवाइस करते हैं कि नहीं, कि कौन से विधि करने हैं, कब करने हैं, इसके बारे में बताते हैं कि नहीं. तो राजा के विधि भी बताए गए हैं, और अगर राजा को ये विधि नहीं पता तो वो विधि के बारे में इन बुद्धिमान लोगों से अपेक्षा है कि उन्होंने राजा को बताना चाहिए. And then the personal qualities he continues to ask whether you dignify God, ancestors, those who have sought asylum, guru, elderly, admissive, clinicians and Brahmins. Do you dignify them or no? So this again is a quality that the king should have, and king must do these things. Do Brahmans who comprehend Shastra and subject wish your well-being? That means the subjects as well as those intellectuals in the country should think of well-being of the kingdom, of the king. So whether they think so or no. Then have you done away? Now there are certain do's and don'ts also. So this is the don'ts of a king on a personal capacity. He says, have you done away with gambling, siesta, that is afternoon sleep. So king is not supposed to sleep in the afternoon. Condemnation, addiction to woman, alcoholism, dancing, playing instruments, and vengeful revocation. Vengeful revocation is घूमना फिरना, व्यर्थ घूमना फिरना. वैसे तो घूमना फिरना होता है, लेकिन व्यर्थ में समय तो उसमें बर्बाद नहीं होता. That is what he is asking. So when we are talking about Ram Rajya, what we are actually talking about is what should king do in order to have a state where people and the subjects etc. are very happy. So these are the qualities, personal qualities that the king should have. Another dues is that, do you make due allocation of time to matters of dharma, artha, kam, and are cognizant of proper times for each and attend to them all? मतलब राजा से भी धर्म, अर्थ और काम ये सब करने की अपेक्षा रखी गई है. ऐसे नहीं है कि केवल राजधर्म ही है, but in personal capacity and due allocation to time also to that and cognizant of that. The other dues are like, do you honor the experts in archery and economics? Because economy of the country is very important. Do you cognate वेद lore? Now वेद जो थे उनका ज्ञान आपको है कि नहीं. वैसे ही एग्रीकल्चर एंड कोवर्ड लॉ, कृषि और गोधन, इसकी कैसे बढ़ाना है उसका ज्ञान है कि नहीं. एंड पनिशेबल लॉ, दैट इज दंड ज्ञान, ये सब आपको है कि नहीं. ये प्रश्न प्रभु रामचंद्र पूछ रहे हैं. और जब प्रश्न पूछ रहे हैं ये राजा से है कि अगर राम राज्य चाहिए तो राजा में ये सब क्वालिटीज चाहिए. विल कम टू ऑल ऑफ दीज. Have you achieved your set goals? Do you follow traditions of our ancestors, noble men? Do you ensure that you do not eat delicious food all by yourself and that you give aid to allies when they request it? And do you feel sleepy appreciatively? So first he says about siesta, that is afternoon sleep, but he says that you have to get up also at an appropriate time. And do you think about the economy in the early morning? I'm using the word early morning here, but exact word in the Valmiki Ramayana is Uttar Ratra. So whether you are thinking about economy at that particular time or no. So the king has to think about all these things. The other personal qualities are, do you begin early with the ampletic fruition coming from a little attemperance? तो थोड़े समय में थोड़ा काम करके ज़्यादा फल मिलने वाले काम आप कर रहे हो कि नहीं. Do you ensure there is no procrastination? Do your cryptonymous consultation remain covert? Now this is very important from the king's perspective, that the cryptonymous consultation should remain covert till they are either near completion or they are complete. Now every king has to ensure this, and do your desire is to have one pandit than having thousands of fools. So that's very obvious. So we'll do away with the obvious things. But let us look at what the king's quality should be as a statesman. Because the king has to be a good statesman to ensure Ram Rajya. So the deliberations that he says is that, do you ensure that you do not think alone? So king should not be thinking alone. At the same time, discussion with multiple people may leak the perdigillions. So it's important that you discuss with a few
And thus, do you ensure that you do not deconcentrate and multiple people? So it should not be discussed with many people as well. And do you ensure your cryptonymous consultations do not leak outside the state? He also talks about says conscient Bharat, that means Vidwan Bharat, that is what he says, that as per the ethicalism, do you discuss with 3 or 4 ministers together as well as separately? Now, what is the context in today's context also when we talk about it? I distinctly remember when there was a team selection, one of the fast bowlers from West Indies, he was not selected in the team, and there were 3 selectors. Individually, each selector said that I fought for you, but collectively they did not. So it's very important that you discuss with the ministers collectively and then individually as well, because collectively their opinion could be different, and when you speak to them individually, the opinion could be different. Similarly, the other things that he asks is, do you appoint valuable people for a pivotal task? It's very important that you have valuable people for pivotal tasks, then less valuable for mediocre tasks, and juniors for the inferior tasks. Have you been assigning pivotal tasks to ancestral, well-aimed, and who do not have fraudulent schemes? Because the ministers and when you appoint people, if they have fraudulent schemes in their mind, that can destroy the very purpose of having those schemes as well. And do you ensure that you do not employ atheists? Atheists are the ones who consider themselves to be Pandit, but they do not have that much of knowledge. And this was clarified in one of the, after this particular episode, when Jabali was one of the ministers in the cabinet, he took the atheist view and tried to convince Ram to come back. And then he was suitably answered by Prabhu Ramchandra also, Prabhu Ramchandra, that this is not the way I will be living. So the appointment of the atheist is not to be there. So this is do not. And do you get up early and display yourself in the full array to people on thoroughfares? It is expected that the king is visible to the people also. It's not that the king is completely isolated from the kingdom or people cannot see him. So he's asking about that, whether you are visible to people or no. Now, when it comes to working conditions, what kind of working conditions one should offer? Because Ram Rajya is not restricted only to the kingdom. It is also with the organization that one is leading. So even when you consider organization that you are leading as a kingdom, your kingdom, there has to be good working conditions. So what he says is that, do copyists approach you freely or do they stay away from you? And then recommends that the best way or the better way is to have a median approach to them to accomplish the task. That means they could not easily approach also, and you should not be completely inaccessible as well. Then Prabhu Ram says, trust that you never deny the claim of righteousness in the name of statecraft, or again, the claims of the statecrafts in the name of righteousness, or either of them from the lust of pleasure in the name of personal desire. मतलब धर्म के नाम पे आप जो काम कर रहे हो उसकी वजह से स्टेट्समैनशिप तो नहीं किल हो रही है और स्टेट्समैनशिप के जगह पे धर्म का तो नहीं आ रहा है. मतलब a king has to have both the things, and that too it should not be with the personal gains. And do you employ morally Sam, Dam, Danda and Bhed? I did not get the very proper English words for that, so I have kept it as it is, that Sam, Dama, Danda and Bhed. The king has to employ these. And are you aware of the fine divine calamities? Now see, the king has to be aware of multiple things. So the 5 divine calamities that he has mentioned is fire, flood, pandemic, drought and epidemic. Now very recently we had discussed one of the book by Michael Levels also on premonition. And premonition was also, that was discussed, George Bush, President George Bush, he actually was told about the kind of pandemic that we had, COVID-19, that this kind of things can happen, and are we ready for that? And George Bush had read that when he was on the vacation. So premonition is the book that subsequently came. But these are the activities that a king has to involve himself in. Then there are certain stayaways also for a king, in order to have a Ram Rajya. And these 14 errors
Prabhu Ramchandra has listed 14 errors which has to be avoided by the king. One is atheism, of course, as we mentioned. Another is a falsehood. Apparently they look very, very primitive, or they look very, very logical, but there is a lot of things that go behind that. Anger, blunder, inattention, shunning knowledgeable, procrastination, indolence, sensual indulgence, solitary determination of political affairs, taking counsel with those ignorant of such affairs, failure to execute decisions, not to employ auspicious rites, and attacking all the enemies at once. So when a king's behavior is expected, these are the 14 errors that the king has to avoid. And do you stay away from, so these are the don'ts, so you have to stay away from bad mouth, the king has to stay away from that, misadventure, trenan, that is droha, unwanted desire, that is irsha, blemishing, corruption, and harsh voice. A king has to avoid all these things. And then there are again do's, the 6 qualities that the king has to have is appropriate time, one should enter into peace treaty, also enter into combat, attack, wait for right time, forcing, and surrender. So in certain cases, he says that it is important that you surrender as well. If the another king is very, very powerful, then you have to surrender also. It's not that Ram Rajya is divine of the Ram Rajya is saying that you do not have to do these. These are the 6 qualities that the king has to have. Now let us look at the ministers, or the qualities of the ministers that Prabhu Ramchandra has said, that the qualities that ministers must have. Do you appoint ministers who are courageous? They have to be courageous to begin with. Sanctor, Jitendriya, I again did not get a right word for this Jitendriya, but they have to be Jitendriya in order to ensure that they do not get into the problems for what we have seen many times. It does happen that because they are not Jitendriya, they enter into some unlawful activities. So they have to be Jitendriya as well. They have to be noblemen and can read the mind of others. The minister should be in a position to read the mind of others. Acclaimable advice is instrumental in ensuring victory for the king, and when these ethical strategist ministers keep the advice secret, it becomes confidential. Otherwise, it doesn't give you the fruits that you are looking forward to. So, do your ministers deduce cryptominous consultation of other states? The ministers have to be competent enough to do this. And then it's for the first time he mentions Kaikai Kumar. By far he has not mentioned him as a Kaikai Kumar. Here he mentions Kaikai Kumar. Do you ensure that because of actious penalization, subjects do not adore your ministers? So it has to be ensured. And this is the only time when he says Kaikai Kumar, because at that time he knew what were the sentiments of the subjects were towards Kaikai. Do you ensure that the king, minister, state, force, treasury, army, and friends complement each other? That means there has to be a synergy between what the king thinks, what the ministers think, what the state wants, how the forts are, how is the treasury, how is the army, and friends. They need to complement each other in order to have a right synergy for Rajya. Then he talks about the resources, that what are the resources and how do you have to go about the resources as well. So, do you pay proper attention to coordination of water, mountains, trees, desert and deserts? That's important. Then, do you protect forests that habitat elephants? Do you have many cows? Now, these are the resources that the kingdom has to have then. Trust you are not content with the number of elements and horses you have, and trust you are kind to subjects employed in farming and cattle breeding. Because these people, if they are happy when they are committed to their work, and do you protect them and their interests by giving concessionaries? What we have also seen is there is a lot of structural change which has happened in the economy in the recent past. Since we have to talk about the contemporary application of the Ram Rajya, we have seen that many people who are working in the farms, they have now moved to city. And they are not going back to the farm.
because they get a decent income in construction industries and others, so they do not go back to the farms, and it is very difficult to get farm workers these days. So that is why here program is asking that these people have to be happy, and in order to keep them happy, maybe there have to be concessionaries given to these people also. About resources, he also says that, does your revenue far exceed your expenditure? Are your expenditures assigned to? Now, where the expenditure personally should be assigned to from a kingdom is towards the gods, ancestors, intellectuals, guests, soldiers, and host allies. So how to distribute or how to ensure the expenditure is taking place in Ram Rajya, this is the opinion that Prabhu Ram had. Now, how should a state and a capital be? So first he talks about the capital, and he says that Ayodhya has an abode to our heroic ancestors. Ayodhya is true to its name. Ayodhya is fortified. She is full of elephants, horses and chariots. Hundreds and thousands of Brahmins, Kshatriya and Vaishya committed to their work stay in Ayodhya. Its citizens are full of zest, they are Jitendriya and transcendent, and it is decorated with diverse mansions. Large number of scholars stay here. So do you ensure proper safety and prosperity of this city? So this is about the capital. And what he says about the state is, here he says Raghunandan Bharat. Now he's not saying him as a younger brother or anything, but Raghunandan, because now he was a crown prince. So he says Raghunandan Bharat, trust your Koshal country has hundreds of thousands of worshipful places. It is crowded with distinguished citizens. Temples, wells and lakes have decorated it, where men and women are happy. Social festivals adorn it. Livestock required for farming is abundant, and there is no violence. Now here, importantly, he talks about the farming, and just look at what he's asking about, where farming is through lakes and rivers, and is not dependent on rain. So when he earlier talks about the divine calamities coming in through drought and other things, he said that the country should not be dependent on the rain, but more on the lakes and the rivers. And the region is free of wild beasts. Wild beasts are the हिंस्र पशु जिसको कहते हैं, वो हिंस्र पशुओं से free हैं. The subjects are free from peril. Mines adorn the region. Sinners have no place, and protected by our ancestors is Helplink that is happy and prosperous. Now, when we are talking about Ram Rajya, it is not that every citizen or every person is absolute God-fearing. There possibly could be some people who are not God-fearing, or maybe some outlaws are also there. So, what is to be done with the outlaws? What Prabhu Ramchandra says is a self-desiring kingship, one who is involved in employing conscientiation, pelf, is an expert in luring servant, confident employees, has to be slayed by the king. Now these are the qualities of a person who has to be killed by the king. Else, king gets killed from such person. So he's advising him that even in your kingdom, probably there could be these kind of people. And when you observe that there are these kind of people, you must slay them. Otherwise they will kill you. And also says that the killer of enemy, now here he calls him the killer of enemy, do you ensure that if an outlaw from the state returns, you do not ignore him considering weak? So these people who are outlawed, if they come back, you do not consider them to be weak. Now, we many times feel that if Ram Rajya is there, what is the need of an army? Should there be army or no? And he says that the army has to be there. But what kind of an army should be there in the Ram Rajya? So do you appoint adventurous, ambitious, intellectual, courageous, well-aimed, noble, vigilant, and loyal to you as commanders? So what kind of commander should be appointed by the king is this. Then he also cautions him, are your soldier battle ready and fortier? Do you test their chivalry? Do you felicitate them and revere them? So what is to be done with the soldiers? What is to be done with the commanders? That is being talked about. Does your army get appropriate ration and paycheck? That's important.
Do they get it timely? Do you ensure that there is no belatedness in it? All these things matter to when you are running a kingdom. Procrastination in disbursement of ration and paycheck to the army can lead to major disasters. So it's again warning Bharat about how to conduct with the army, or how the conduct of the king should be. Are your officers born in Gradley clan loyal to you? So they have to be from the Gradley clan and loyal to the king. And are they wholeheartedly even to die for a cause devoted to you? Now, it is not that only army is important in the Ram Rajya. It is also the ambassadors. What kind of ambassadors one should appoint, or a king should appoint. He says that, Bharat, do you ensure that the ambassadors are citizens of your country? The first and the foremost thing, they are scholar, skillful, talented, and good orator. Because when you want to defend yourself or decisions of your country, you need good orators as well. Do you ensure that you do not friend with? Now he says that who should be friend with and whom should not friend with, about the other kings. He said that you do not friend with kings who are childish, aged, unhealthy for a long time, ostracized, coward, supported by timid, who has given asylum to greedy, disconcerted officers and subjects, sensual, who is counseled by cumbersome, slanderer of God and Brahmins, unfortunate, believer on fate and thus ignoring manward, drought-stricken, with no army, not living in own country. This is not exile, but not living in the own country, but living in another country. Has multiple enemies and star-crossed, that means Durdaivi, unfortunate, and unrighteous. So he says that you should not appoint ambassadors in these countries also, where the behavior of the king is like this. And then he also talks about the enemy, what kind of your behavior should be, and what kind of the intelligence sources you should have. Do you extract information about the 18 authorities of the enemy as well as self from 3 different spies? So it's not during Ramayana there were no spies, there were spies. And they were trained and they had to collect information about 18 authorities in the other countries and self-country also. These are the ministers, the 18 people are the ministers, the priest, the crown prince, commanders, concierges, chief of Seriglo, that's Karagruha, prison, Kalabuns, treasurer general, a deterrent secretary, Kotwal who appoints the guards, sculptors, Dharmadhyaksha, convener of meetings, judges, batsman head, border commanders and forest tellers. There is one Rakshak. So these are the 18 people who should be spied not by one person but by 3 persons. And not in only your kingdom but other kingdom as well. And self-kingdom as well. And do you engage in statesmanship of getting in from the enemy states, those who have not received wages? So get these people to your side, are insulted in the other country, not happy with the king, or else who are being threatened. These are the people from whom you have to get information about from the other countries as well. And let's look at what the citizens are. Do you ensure that the subjects do not face advenience from the authorities, thieves, enemy, those who favored king, or the king himself? So there has to be no advance from these people also. And then do you ensure happiness and safety of women? Do you ensure that you do not trust them excessively and share secrets? And what kind of a justice one expects when we are talking about Ram Rajya? He says that, do you ensure that no noble, honest man is ever charged with theft without being first interrogated by the men learned in the Shastras, and if innocent, is never imprisoned out of greed? And when a thief, either caught in the act of or discovered with the stolen property, has been seized and interrogated, I hope he is never set free out of greed for money. And if you have this kind of a justice, people believe in the courts also. And he further says that I trust
that your pluriglander, that is Bahushrut ministers, render judgment impartially when a rich man, a poor man are engaged in a suit. For the tears of people shed when falsely accused come to slay the livestock and children of the king who rules the person for personal gains. And finally he asks about the forts, because you need a great defense as well. So what he says about the forts is that are your all forts well stocked with money, grain, weapons, water, with engines of war, and with the craftsmen and archers. So when we are talking about Ram Rajya, these are the things which are very important, and these are the things which Prabhu Ramchandra said that if they exist, the Rajya automatically becomes Ram Rajya. So these are the important things which Prabhu Ramchandra has mentioned. He mentions it as a wellness of the kingdom. So when we are talking about Ram Rajya, these are the major issues which need to be addressed to by the king. And when king addresses to these issues, the praja, the subject, automatically are very, very happy. So that is Ram Rajya, and it is true even today as well. And as I said, it's not only about the state, but even for an organization also, a company, organization, a firm, they have to ensure that these are the basic things which are done in order to run even an organization efficiently and wisely. So that's it as about Ram Rajya and its relevance for today. So over to our moderator once again. I shall humbly request all the audience first to ask anything from our learned speaker today. सर्वप्रथम सम्मान आपका है, क्योंकि ये शास्त्रार्थ है और शास्त्रार्थ में सभी को अर्थ का उकल करने का अधिकार है और पूछने का भी अधिकार है. तो आप में से जो पहले कुछ पूछना चाहेंगे, आप सबका स्वागत है. Any question, anything to learned speaker? डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअली ये समझना चाहता था कि ये जो अभी आपने जो डिफाइन किया, ये मीटिंग हुई है चित्रकूट में और राम जी भरत से ये सवाल पूछ रहे हैं. इज इट एक्चुअली उस वक्त राम जी ने राज्य किया ही नहीं है. दिस इज अ something theoretical knowledge what he gained, he shared, और एक प्रकार से रिवीजन है, क्योंकि भरत ने भी वहीं पढ़ा, तो ये रिवीजन हुआ कि ये तुम करोगे या याद है तुम्हें. सो दिस इज सम, लेकिन इसे टर्म अपन कर रहे हैं राम राज्य. तो मैं जो आपकी बातों से समझा था वो ये था कि जब वो राजा बने तब उनने ये इम्प्लीमेंट किया, इसलिए राम राज्य कहेंगे या इस घटना को अपन राम राज्य कहेंगे. राम राज्य की संकल्पना क्या है, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे. मतलब अगर राम राज्य में आपकी प्रजा सुखी हो, वैसा हमने बात किए थे, तो ये भी इन्होंने भी मुझसे पूछा था कि राम राज्य में प्रजा ऐसी थी, प्रजा के साथ में ऐसे हो रहा था. तो वो इसलिए हो रहा था कि जो साइंस राज्य करने का जो साइंस है, वो साइंस उन्होंने उनको बताया था. द आर्ट स्टिल लाइज विद भरत व्हेन ही इज रूलिंग द कंट्री. तो शास्त्रार्थ आप जब पढ़ रहे हो या जब शास्त्र पढ़ रहे हो, शास्त्र इज साइंस, तो आप जब ये शास्त्र पढ़ रहे हो तो ये पढ़ने के बाद में इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं, ये सवाल उनसे किए गए थे. क्योंकि राजा न होना इसका मतलब ये नहीं था कि वो राज्य करना जानते नहीं थे. He was to be a prince, crown prince. He was to be a crown prince. For all these
qualities that he had in him. And that is why Dashrath as well as his subjects were looking forward to having Ram as a Raja, because he could implement those. पढ़ना एक बात हो जाती है, और इसीलिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि जो पढ़ाते हैं, जो किताबों से पढ़ाते हैं वो शिक्षक होते हैं, और जो आचरण से पढ़ाते हैं वो आचार्य होते हैं. तो जैसा हम लोग महाभारत में भी कहते हैं द्रोणाचार्य या कृपाचार्य, ये पढ़ाते तो थे युद्ध कैसे करना है, लेकिन खुद उतने अच्छे योद्धा भी थे. तो इसलिए उनको द्रोणाचार्य, या उनके बाद में जो थे आचार्य कृपाचार्य भी थे, या फिर हम लोग जो भी आचरण से पढ़ाता है वो आचार्य कहलाता है. अब प्रभु रामचंद्र का आचरण ऐसा था, भले ही वो राजा नहीं थे, लेकिन क्राउन प्रिंस होने के लिए जो क्वालिटीज चाहिए थी वो सब थी, और वो भरत को वो बता रहे थे कि ये सब चीजें होनी चाहिए. और जब एक्चुअल वो राम राजा बन गए तब उन्होंने ये चीजें इम्प्लीमेंट की थी. तो इस वजह वो राम राज्य है, क्योंकि मुख्यतः हमें यही नहीं समझ में आता है कि राम राज्य मतलब क्या. ऐसा लगता है कि कोई एनिमी नहीं होगा, कोई स्पाइस नहीं होंगे, कोई चोरी नहीं होती होगी, कुछ नहीं होता होगा. ऐसा नहीं है, ये होना नहीं चाहिए. इसलिए राजा के क्या कर्तव्य है उसके ऊपर में ये संभाषण हुआ है. इट्स मोर अबाउट दैट. इस संदर्भ में आपका जो प्रश्न है इसके लिए एक प्रति प्रश्न और निर्माण होता है. तो मैं आदरणीय वक्ता जी से पूछना चाहूँगा, अभी आपने कहा कि ये शास्त्र है, बिल्कुल सही है, और इसलिए पहले भी था और आज भी वो शब्द इस्तेमाल में होता है. राजनीति शास्त्र कहते हैं पॉलिटिक्स को. राजनीति शास्त्र ये शास्त्र है, ये शस्त्र नहीं है, और आज की तारीख में वो केवल शस्त्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है. तो आपने जो भी राम राज्य का वर्णन किया और जब ये अभी माननीय ने सवाल पूछा है, इसमें एक प्रश्न मन में जरूर आता है कि क्या सही में राम राज्य व्यवस्था थी, वास्तविकता थी? और अगर वो वास्तविकता है, ऐसा अगर हम प्रतिपाद्य कर सकते हैं, तो क्या उसको केवल एक उच्च आदर्श के रूप में ही माना जाए या वो प्रैक्टिकली इम्प्लीकेबल रही है? जैसा मैंने अभी आपको जितने भी टोटल जो सवाल थे ये 75 थे, 75 क्वेश्चंस थे, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है. और उसके लिए आचरण जो है, मतलब राम राज्य अगर चाहिए तो आचरण राजा का अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन राजा की ओर से होना चाहिए, तो प्रजा सुखी होती है. मतलब हम लोग जो राम राज्य कहते हैं तो हम यही सोचते हैं कि प्रजा बहुत सुखी रहना चाहिए. तो प्रजा को अगर सुखी रहना है तो राजा का वर्तन कैसा होना चाहिए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, ये साइंटिफिक है और प्रैक्टिकल भी है. इसलिए मैंने वो उदाहरण दिए थे कि दिस इज प्रैक्टिकल. सो कैन आई आस्क? यस प्लीज. सो सीता जी का जो त्याग हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट रूमर, हाउ डू यू एक्सप्लेन विद दीज टेनेट्स? सीता त्याग हम लोग वैसे भी वो उत्तर रामायण में है, और मैंने जैसे पहले ही कहा था कि जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वो युद्ध कांड तक ही था. फिर भी प्रचलित ये है कि उसको शब्दशः नहीं लिया जाता है. युद्ध कांड में भी सीता का अग्नि दिव्य है, और हम लोग जो कहते हैं कि अग्नि दिव्य, और सीता के ऊपर में जो चार्जेस लगे थे वो चार्जेस को उसको डिफेंड करना था, वो अग्नि दिव्य था. अग्नि में प्रवेश करना नहीं था. आप देखिए कि जब कोई भी किसी को भी चार्जेस लगते हैं तो वो चार्जेस में से बाहर आने के लिए उसको जो करना पड़ता है वही अग्नि परीक्षा होती है. और उस वक्त में प्रभु रामचंद्र जी ने, जब सीता ने कहा था कि मुझे रावण का वध होने के बाद में कि मुझे प्रभु राम से मिलना है, तो प्रभु राम ने कहा था कि सीता को पहले विभीषण से कहा, वो तो राज्य में जाने वाले नहीं थे, एक्साइल में थे तो राज्य में जाने वाले नहीं थे. विभीषण से कहा था कि सीता को आप मेरे पास में भेजो और अलंकृत करके भेजो, उसको अलंकृत करके वो मेरे पास में आएगी. और वो जब आ रही थी तब वो कितना भी नहीं कहे तो भी महारानी ही थी, तो बाकी वानर जो थे उनको अलग किए जा रहे थे कुछ वॉलेंटियर्स की तरफ से. तब प्रभु राम ने कहा था कि उनको अलग मत करो, उनको देखने दो सीता को, वो उसके लिए लड़े हुए हैं, उनको देखने दो, और उनके मन में भी कुछ शंका होगी तो उनको पूछने दो. और ये अग्नि दिव्य था. अग्नि दिव्य मतलब कोई भी अगर इफ एनी पर्सन इज चार्ज विथ समथिंग,
till the time they are proved not guilty, they have to go through this Agni Divya. And that's what Agni Divya is. और हम लोग भी So you are guilty till you are proven innocent. sorry yes till the time you prove yourself innocent or not guilty, you have to go through this, and the torture that one really goes through, that is Agni Divya. Thank you. अविनाश बागड़े, आपने जो व्याख्यान दिया, राम राज्य पे व्याख्यान दिया, उसका दूसरा पार्ट है वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता। तो इस प्रासंगिकता पे आप क्या प्रकाश डाल सकते हैं? मैं यही कह रहा था कि जो राज्य का उल्लेख उस वक्त में है वो आज भी है। आज भी जब हम लोग एम्बेसडर्स अपॉइंट करते हैं तो एम्बेसडर्स कैसे अपॉइंट करने चाहिए, या आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के इसमें कहोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं ये उसके एम्बेसडर होते हैं, उनका बर्ताव कैसा होना चाहिए। अगर एनिमी है तो एनिमी के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए, किनके साथ में फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, ये सब जो है ये आज की घड़ी में भी उतना ही उपयुक्त है जितना उस वक्त था। तो जितने भी हमने ये कहा है कि अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पे फार्मिंग उस वक्त कैसे होता था, तो सिर्फ रेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था, लेक्स और रिवर के थ्रू होना चाहिए था। आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश में भी कहीं जगह पे ड्रॉट होता है तो कहीं जगह पे फ्लड्स होते हैं। तो इरिगेशन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रेन अ लॉट, तो कहीं ड्रॉट नहीं रहेगा। प्रीमोनिशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि क्या हम लोग बिल्कुल ही तैयार नहीं थे उसके लिए, और हालांकि इसके बारे में बताया गया था। वो किताब बहुत पहले लिखी गई थी, जॉर्ज बुश जब प्रेसिडेंट थे तब लिखी गई थी, उसके पहले ही लिखी गई थी, उन्होंने वो वेकेशन पे पढ़ी थी। तो ये सब चीज़ें अभी भी उतनी ही रिलेवेंट है। बहुत सी चीज़ें ऐसे हो रही है कि जो हमारे यहाँ से वेस्टर्नर्स उनके यहाँ पे ले जा रहे हैं और देन दे आर पुटिंग इट इन देयर नेम ऑल्सो। That is also happening, but that's not what we want to discuss. What we are talking about is, this is still very relevant today. You have to have right irrigation. You have to have a right justice to people who are charged by something. You have to have right kind of ambassadors and everything that I mentioned. It's still very, very relevant even today. It's not that it was applicable only then. That Ramayana was in an era where people were simple, predominantly, and today we are predominantly crooked, for want of a better Hindi word. मैं छोड़ रहा हूँ, हरामखोर लोग हम हैं, तो ये समय रामायण impossible लगता है मुझे। Although that idea looks it looks like more like an ivory tower and not practically implementable. Is it? So some of these qualities which you mentioned, how should an ambassador be appointed and all, those could be best practices. But can I see it in action today? It's impossible. Unless you can share that it is practically possible. I don't see any politician, for that matter, doing justice to this role. As so politics aside, I don't see that effort or those qualities in any leader who is implementing this. So we can't have Ram Rajya ever today. So this will remain an idea which probably I hope and I still don't expect it to see it in my lifetime. Please. Basically, it's not, I mean, when you said that there were no crooked people then, but if you see why Ramayana happened, it happened because Ravan kidnapped Ram's wife. So it is not crooked people were not there during Ramayana time, they were there. And that is not one instance, there are multiple instances that there were crooked people as well. But what should be the behavior of a king and what should be the behavior of the ambassadors and the ministers and others is very important. Now, what you say, I see a point in that it is a very idealistic situation. Yes, it is an idealistic situation. But when we are talking about whether it can come to fruition or no, it can. You need to have that kind of a political will to implement these things.
And if this political will is demonstrated by politicians, this can happen. But that political will is lacking, and that is the reason we feel that somehow this is just an idealistic situation and we can never get into that. If you see, I mean, if you try and analyze it deeply, fine, it looks very idealistic. But even if it looks idealistic, it is possible. Now, let's see why we don't say Ravan Rajya, or why don't we say Pandu Rajya, or why we do not say Yudhishthir Rajya. We only say Ram Rajya. We do not say, they were also good kings. It is not that they were not good kings. They were good kings. But they did not follow all these ideals. So these ideals in the event, if followed by the king himself or queen herself, then it is possible. But you need the team to lead it, a team to have it. You need to have right kind of ambassadors. You need to have right kind of ministers. You need to have right kind of a judiciary. All these things, when they fall right, then only that is possible. Otherwise, it remains a distant dream. What do you say? I agree with that. But at the same time, I'm saying that it is not completely impossible. It is possible. We have seen that happening in some of the best run organizations also. If the organization is to be best run, these are the practices, these are the policies which need to be implemented. But looking at the current situation, it looks a distant dream. That I do agree with you. You want to add? Okay. Yeah. Yes. Where they are like Ram Rajya, like Scandinavian countries. The crime rate or the honesty is really far, far superior. So it's not that it cannot happen in this world. But yes, in India, it seems difficult because we got corrupted so much actually. Okay. I will ask only one question I'll give to you. In today's relevance in India, whether Ram Rajya means the style of Ram is more appropriate or style of Krishna is more appropriate? That's a very important question. And actually, why I started writing a book on this was the same question was asked also by one of the industrialists, that they contradict each other. But actually they do not contradict each other. Even in Ram Rajya, as I mentioned, if an outlaw is there, and if his desires are detrimental to the interest of the nation, he has to be slayed by the king. This is what Prabhu Ramchandra is saying. So he's not taking for granted that everybody will be good. Fine. And he killed. It's not that he did not kill. He did kill many people. He engaged in the war. Even Valivad, if you look at it, Valivad also, Vali was also a king. But he killed Vali also because his behavior was not appropriate. So when there are people whose behavior is not appropriate, they have to be suitably punished. And if that is to be done, that is what exactly Krishna has also said. Krishna also said the same thing in Bhagavad Gita as well, that if a person attacks you, you should not be saying that, okay, you have attacked me, fine, whatever you want to do, do. No, you have to counter-attack. And here Prabhu Ramchandra is also saying the same thing, that if there are the people who themselves want to be king, and they have got these kind of ambitions which are crooked in nature,
either you kill them, or if you do not kill, they kill you. So it's not that Ramchandra is not mentioning slaying people who are crooked. He says that the judiciary has to be good about it. So even to answer this question, there is no contradiction between Ram Rajya and subsequently what Krishna has said. Fine. Most of the times we do feel that Krishna is more contemporary because he faced a lot of people who were crooked. Ram faced probably only Ravan as a crooked. But there were others also. Yeah. Yeah. Now Treta Yuga, Dwapar Yuga, Kali Yuga, Satya Yuga first, and then Treta Yuga, then Dwapar Yuga and Kali Yuga. These are not mentioned in Valmiki Ramayana per se. Fine, but then there are other scriptures where it is a mention, and they mention that what will be the people in that particular country, how will be their behavior. So Kali Yuga, which you find it mentioned in the Guru Charitra, fine, that is another scripture that we have virtually considered as a fifth Ved by most of the people. There they said that Kali Yuga, people will be ruled by Jivma and Linga. That is, lust will be very, very high. And that is what will be the life of people here. So they will try and win over by Jivma and Ling. And that's what we are seeing here. So here also the same punishment has to be given. And if these punishments are given, then people have a faith in judiciary. And once they have that faith in judiciary, probably people will approach judiciary. Whereas today people do not feel that they have a need to approach judiciary. They silently are, even if there is an injustice, they absorb it as my fate and accept it. But that won't happen. And that is what Ram Rajya was. The judiciary was also very good. People were tried, and they were tried fairly. And the justice was done with no greed. That is what I talked about the judiciary also in Ram Rajya. I just want to add one thing. See the coincidence. Here we are 16. Ram Rajya, Prabhu Ramchandra belongs to Raghuvamsh, that is Surya Vamshi. और आप जानते हैं सूर्य की 12 कलाएं होती हैं. तो प्रभु रामचंद्र के संपूर्ण अवतार में 12 कलाएं देखने को मिलती हैं. लेकिन आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर आगे है कि भगवान श्री कृष्ण ये चंद्रवंशीय हैं और चंद्र की 16 कलाएं. इसलिए श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लीलाओं को मर्यादा में रखकर किया. और भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि वो लीलाओं की मर्यादाओं को अपना बताते चलते हैं. तो ये आपके प्रश्न का भी उत्तर आ रहा है इसमें ही कि देखिए सीक्वेंस कैसा है. हम त्रेतायुग से, अभी आपने त्रेतायुग से शुरुआत की, उसके पहले सतयुग है. सतयुग के बाद में त्रेतायुग आ रहा है. त्रेतायुग में फिर हमको वर्णन देखने को मिलता है कि वहीं पर सीता के बारे में कानों सुनी आंखों देखी बातें चल रही हैं. और अग्नि दिव्य का जो सर ने बहुत अच्छा वर्णन किया है उसके ऊपर वाल्मीकि का भी एक ये था और तुलसीदास जी ने भी लिखा हुआ है कि हम हर जगह देखते हैं कि भरत ने कहा है उत्तरकांड में, भरत कहते हैं कि आपके राज्य को 1 मास हो गया, लेकिन 1 मास में इतना बड़े परिवर्तन है. तो कुछ वर्णन वो करते हैं, उसकी चंद लाइनें केवल आपके सामने रखूंगा जो भरत ने कहा है. और उसमें एक बहुत बड़ा वाक्य है, महिला वर्ग यहाँ बैठी हैं उनकी पूरे समादर के साथ में. वो कहते हैं कि स्त्रियां बिना कष्ट के प्रसव करती हैं. आपका जो प्रश्न था वैसा ही ये प्रश्न और आता है. इसके ऊपर चर्चा हुई और एक जगह प्रश्नोत्तर हुआ था, इज इट पॉसिबल मेडिकली. लेकिन हाँ, उस समय की शुद्धता, पवित्रता, वैचारिक पवित्रता, भावनात्मक पवित्रता और गर्भ संस्कार के समय से ही जो सारी चीज़ें होती थी. मेरा एक अपना विषय अलग है, मैं उसके ऊपर कभी बोलूँगा, परंतु यह संभव हुआ है. और उसी का उन्होंने आगे परिक्षेप में दिया है कि जो अग्नि दिव्य है वैसा ही कहते हैं कि वहाँ पर सीता के बारे में कहते हुए स्त्रियों के अधिकार के बारे में उन्होंने एक जगह किया है. तो मेरा प्रश्न था उसके ऊपर मैं जो पूछना चाहूँगा कि स्त्रियाँ विधवा नहीं होती थी, ऐसा वर्णन है राम जी के बारे में. तो मैं आज के हमारे जो माननीय वक्ता हैं उनसे कहूँगा कि इस वाक्य को जरूर आप स्पष्ट करें कि स्त्रियाँ विधवा नहीं होती थी, इसका अर्थ क्या है. फिर वही आता है कि
विधवा स्त्री का आचरण कैसा होना चाहिए था। मतलब जो आगे चल के हमने देखा था कि एक विधवा स्त्री को बाल निकालने पड़ते थे या वो कोई सामाजिक इसमें नहीं जा सकते थे, तो उस हिसाब से उन्हें विधवा कहा जाता था और उन्हें अपवित्र भी माना जाता था। लेकिन ये सब चीज़ें उस वक्त में नहीं थी। उस वक्त भी ये मतलब सती जाने के लिए भी जो प्रथा थी उसमें भी ऐसा था कि गर्भवती स्त्री सती नहीं जाएगी, पुत्रवती स्त्री सती नहीं जाएगी। और रामराज्य में भी आपने उसके बाद में भी देखा है कि दशरथ की मृत्यु के बाद में ना तो कैकेयी सती गई थी, ना सुमित्रा, ना कौशल्या, कोई भी सती नहीं गए थे। तो ये प्रथा उस वक्त में थी नहीं। तो विधवा होने की वजह से जो व्यवहार करना है इसके प्रति बाद में सब ये चीजें आई हुई हैं। रामराज्य के वक्त में ये सब चीजें नहीं थी। अभी अभी इन्होंने जो प्रश्न उपस्थित किया था कि आज के डेट में मैक्सिमम लोग क्रिकेट रहते हैं, तो एक प्रति प्रश्न मेरे दिमाग में आया, वो ये कि क्यों होते हैं आज के डेट में लोग ज़्यादा क्रिकेट क्यों हो रहे हैं, अच्छे लोग क्यों नहीं निर्मित हो रही है। तो इसका उत्तर हमारे शिक्षा समाधान में, जो हमारी शिक्षा पद्धति है प्राइमरी, जहाँ नेशनल कैरेक्टर राष्ट्रीय चरित्र की निर्मित होती है, उसी जगह पे है। अगर वहाँ से अच्छे लोग ही बेसिकली तैयार नहीं होंगे तो आगे चल के समाज के अंदर क्रिकेट लोग ही आएंगे। दैट इज पार्ट 1। पार्ट 2, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोनार्ची एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हर कोई राजा है। अब इस चक्कर के अंदर में राज्य के जो केंद्र बिंदु है वो बदलते चले जाते हैं, राज्य के समीकरण बदलते चले जाते हैं, और ये सारे समीकरण अगर सही रास्ते पे आने हैं तो शिक्षा पद्धति सुधरनी चाहिए। ये सुधरेंगी तब कहीं जाके 100-200 सालों के अंदर में कहीं राम राज्य की आप कल्पना कर सकते हैं। अदरवाइज क्रिकेट ही निर्माण होते रहेंगे और क्रिकेट ही राज्य करते रहेंगे, देन आई डोंट थिंक राम राज्य आ सकता है। आपके एक प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। संविधानात्मक दृष्टि से और रजिस्टर्ड, जिसको हम कह सकते हैं रिकॉर्ड पर, थाईलैंड एक ऐसा देश है जो कहता है कि हमारे यहाँ राम राज्य है। थाईलैंड चूंकि बुद्ध धर्म के अनुसार चलता है, बुद्धिस्ट कंट्री है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, लेकिन उनके यहाँ संविधान जो है पूरा राम राज्य के ऊपर बना हुआ है। वहाँ के जो राजा, नाम आज भी है वहाँ राजा, प्रधानमंत्री को राजा कहते हैं, और वो प्रधानमंत्री और राजा जो ओथ लेता है वो राम को साक्षी रखकर ओथ लेता है। और राम राज्य की जो जो विशेषताएं और नियमावली जो हमारे आज के माननीय वक्ता जी ने कही है वह सारे संविधान में है और उसका पालन वहाँ किया जा रहा है। बहुत सही है कहा था। मेरी तरफ से एक अंतिम प्रश्न आज का केवल आ रहा है, बाकी आप लोग और अभी पूछ सकते हैं। वो यह है कि राम राज्य में आदर्श राजा का वर्णन तो संभवतः है और प्रभु श्री राम उस आदर्श को प्रतिपादित करते हुए, पालन करते हुए दिखते हैं, परंतु राम राज्य की संकल्पना में आदर्श प्रजा का कोई संकेत उपलब्ध है क्या? संभवतः इस प्रश्न में आपके प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। जी, प्रजा के संदर्भ में नहीं है, लेकिन प्रजा का बिहेवियर अच्छा कैसे होता है, दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा तो प्रजा अपने आप सही रहती है। मतलब आप आज भी देखो कि अगर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छा रहा तो प्रजा ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगी। जैसा इन्होंने कहा था कि शिक्षा प्रणाली भी है, तो शिक्षा प्रणाली भी अगर अच्छी रहती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, administration is non-corrupt, fine, administrators are doing their job properly, then automatically, I mean, राम राज्य में जो मुख्य धारा जो रही है वो किंग के ऊपर में, राजा के ऊपर में ही है। ये पूरी तरह से राजा की जिम्मेदारी है कि राम राज्य कैसे एग्जीक्यूट करना है। शास्त्र तो है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, दैट इम्प्लीमेंटेशन थ्रू वेरियस पीपल, मिनिस्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे इंश्योर that the things are done in a proper way. So obviously the praja will behave properly. Yeah, will. राम और कृष्ण के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो राजतंत्र है, आज के समय में लोकतंत्र है। आज के दिन में यदि राजा राम को हम इलेक्शन में खड़ा करेंगे तो वो जीतेंगे क्या? आपका सवाल, आजकल के लीडर्स को चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, कितने भी अच्छे लीडर्स रहेंगे लेकिन जिस तरीके से
ऑपोजिशन आता है तो उनको सस्टेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कितना भी अच्छा काम कर ले। तो यदि हम आज के रेलेवेंस में बात कर रहे हैं तो फिर हमको अपने क्या उद्देश्य रखना चाहिए? आपका सवाल यह है कि अगर आज राजा राम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो वो जीतेंगे क्या? एक तो वो जीतेंगे क्या, इन्हें क्या हम अपने उद्देश्य रखें, कैसे राम के यदि हम उद्देश्य रखते हैं तो इलेक्शन जीतना इम्पॉसिबल है, राज्य करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अभी हम लीडर के रेलेवेंस में जब बात करेंगे, राजा राम के जैसे लीडर यदि हो भी गए तो वो लीडरशिप नहीं रख सकते, वो ही कैन नॉट बी अ लीडर, क्योंकि वो जीतेंगे ही नहीं। उनको प्रजा से जीत के जाएंगे तभी वो हमारे राजा बनेंगे ना। Sure. So this basically means that the Krishna way of doing things is right. As an ancillary to that, what she is saying, the Krishna way of doing things will work in India today. Can you imagine Ram saying to Duryodhan कि थोड़े से फूल पहन के चले जा, and then Ram hinting to Bhim कि वहाँ मार? At least whatever little I know of Ramayana, उसमें राम के कैरेक्टर से ये नहीं होगा। जो भी छल कपट की बात है वो राम नहीं करेगा। और आज के कंटेक्स्ट में अगर मैं इतना ज़्यादा सीधा हूँ, इतना ज़्यादा इनोसेंट हूँ, तो मेरे को उल्लू बनाया जाएगा 24 घंटे, और आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, लीव असाइड रनिंग फॉर एनी पॉलिटिकल पोस्ट एंड ऑल। सो इट विल रिमेन यूटोपियन। Okay. Just to answer your question, it is not chal या कपट, ऐसा नहीं है। You have to be righteous in your work. ये वाली ने प्रभु राम से कहा था कि मैं आपसे युद्ध नहीं कर रहा था, फिर भी आपने मुझे मारा, तो कहीं ना कहीं तो भी आपने मेरे साथ छल किया है, ऐसा वाली का कहना था। उसके ऊपर में भी प्रभु रामचंद्र ने यही बताया था कि यू डिजर्व दिस काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। और उसमें 3 उन्होंने मुख्य बताए थे। एक तो ये बताया था कि तूने जो काम किया हुआ है, जैसे सुग्रीव की पत्नी को उसने ले गया था, इसके लिए राजदंड जो है वो वध ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने ये कहा था कि तेरा ये कहना कि मैं तेरे से युद्ध कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये बात ही नहीं आती, क्योंकि तू शाखामृग है। शाखामृग का क्षत्रिय को शिकार करने का अधिकार है, तो मैंने तुझे क्यों मारा, तो मैंने तेरी शिकार भी की है, प्रभु रामचंद्र कहते हैं। मतलब नहीं छल कपट नहीं, व्हाट दैट इज स्टिल अ जस्टिस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट हाउ यू इंटरप्रेट हाउ no just so if the behavior of the king is righteous, fine, then automatically the praja becomes good. To answer your question also, it is not that the person straight becomes prime minister. They have to go through certain stages. Fine, in the democracy also, there will be very few lucky who directly become prime minister. But otherwise, the leadership has to go through various stages. Fine, they don't become big leader immediately. They go through these stages. And when they are going through all these stages, their character is evaluated by people. It's not that it is not evaluated. So maybe they are corporator first, then they become MLA, and then they become MP, and then they become maybe minister, and then finally prime minister, etc. During every time, the character as well as the trust has to be gained by the leader. There are many, in Ram Rajya also, I mean that time as well, there was no democracy. That's absolutely correct. There was no democracy. It was kingship. Fine. But this king has to acquire all those qualities in order to be a king. They had to undergo, जैसा शिक्षा प्रणाली आपने कहा था, कि Ram also had to undergo that training under Vasishtha, रघुवंश के जो priest थे, उनके through उनको जाना था. Krishna को भी, even Krishna had to go to Sandipani and learn all these things, though they were born leaders. So these leaders had to had social acceptance also. And here also what Ram says is that if this doesn't happen, then the intelligent people will not stay in your country. They will move away. So you have to honor, revere these people.
So today also, even if Ram has to contest election, he will have to go through all these stages one by one. And once he go through these stages, probably people will, he will gain the trust of the people and then become Prime Minister. Fine. I do not want to name the Prime Ministers, but if you look at most of these Prime Ministers, they have gone through this hierarchy. We have a couple of examples also who directly became Prime Minister, that's fair, but they did not last too long. And some of the decisions that they made were also probably proved to be derogatory in the long run. So when you are looking at Ram Rajya and long run, you have to go through these stages and evolve as a leader and ensure that you are leading the kingdom in that way. So probably even Ram will have to contest elections, gain trust, and then after gaining the trust, be true to the character, and then probably when people understand that yes, this is what we want, they become king. No, we. No, it is not. If a person is crooked, that is what Ram Rajya says. If the person is crooked, you have to deal with them through judiciary. You have to deal with them. You do not take action immediately. And who is going to decide whether the person is crooked or a person is not crooked? It has to be judged by the Shastrokta Paddhati. That is what I was mentioning. That through the judiciary, who is impartial, and then you give a judgment. You wanted to add something? Just in one sentence I can advise, स्वयं के लिए आप राम बनिए और समाज के लिए कृष्ण बनिए. स्वयं के लिए राम बनिए और समाज के लिए आप कृष्ण बनिए. यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल. और इसलिए संभवतः हमारे भारत में राम और कृष्ण दोनों को ही आदर्श माना जाता है. धन्यवाद. सर मैं ये कह रहा था कि थोड़े से 2-3 सवाल के इसमें एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूँगा. उसमें आपने बताया साम दाम दंड भेद, ये रामायण राम राज्य के समय भी थी और महाभारत के समय कृष्ण के समय भी थी. सिर्फ इतना है कि श्री राम ने भी साम दाम दंड भेद उपयोग किया, जिसका आपने अभी वाली का उदाहरण दिया. वैसे कई उदाहरण हैं. अगर आप उसमें सिमिलैरिटी ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये साम दाम दंड भेद सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट राज्य के लिए आवश्यक है. ये रामायण में भी था और महाभारत में भी, कृष्ण के यहाँ पे भी था. सिर्फ हुआ ये है कि हमको वही एग्जाम्पल्स याद हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के एग्जाम्पल्स हैं वो ज़्यादा याद हैं. रामायण के बारे में शायद हम लोगों को उतना ज़्यादा याद नहीं है. जैसा भी ये वाली का जो एग्जाम्पल दिया, दैट इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल, बट हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस? सो दैट्स, आई थिंक दैट्स प्रॉबेबली द रियलिटी. एंड सर ने जो अभी कहा कि हमारे लिए हम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे लिए आदर्श रखें और बहिर आचरण करने के लिए जो सर ने कहा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा उसी में मैं एक छोटा ऐड करना चाहूँगा. हम एक्सपेक्ट सभी जगह से करते हैं, राइट फ्रॉम फ्रेंड्स टू फैमिली टू इवन राज्यकर्ता. लेकिन हमने अपने आप को कितनी बार ये पूछा है, या हमने अपने आप को कितनी बार ये कहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मेरा कितना ध्यान है? हम बुद्धि विलास, श्रवण विलास, सारे तरीके के विलास में लगे हुए होते हैं. प्रज्ञा विलास में कब लगेंगे हम? आचरण हम कब करेंगे? छोटी छोटी चीज़ें हैं. सुबह अगर हम उठ के शुरुआत ही कराग्रे वसते से करते हैं तो आप बताइए क्या ये अच्छा नहीं है? हमको बताया गया, किसने बताया? जो हमारी एकत्रित कुटुंब पद्धति थी, दादाजी को काफ़ी चीज़ें करते देखी, दादी जी को काफ़ी चीज़ें करते देखी, हमको किसी ने पढ़ाया नहीं. तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि शिक्षा पद्धति तो चेंज करना ही है,
मैं ये कहूँगा कि क्यों न मैं अपने आप को चेंज करूँ। जो हमारे दादाजी दादी जी ने जो हमको बताया है, जो हमने उनसे सुना है, उसका अगर 2% 5% भी अगर मैं आचरण कर लूँ तो क्या ये उचित बात नहीं है? सुबह 4 बजे उठकर हम देखते थे कि दादाजी योग साधना करते थे, ओमकार करते थे। क्या मैंने किया? मैंने मेरे नेक्स्ट जनरेशन को बताया मतलब मैंने करके बताया। कितनी सीधी सी बात है। ये जो अच्छी चीजें, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये तो सभी लिखी गई है, सभी है। आज तो गूगल जैसे टूल्स हैं, आपको सभी मिल जाएगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है, हम लोगों ने उसका आचरण, जो आपने बीच में एक बार कहा भी था कि हम लोग उसका कितना आचरण करते हैं। अगर शुरुआत जैसे सर ने कहा कि हम अपने आप से करते हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी वो देखती है। समाधान जो एक बहुत बड़ी बात है, निरोगत्व जो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए हम अपने आप को अगर दिन में सवाल पूछे कि मैंने आज ये 2 चीज़ के लिए, 3-4 और चीज़ें हैं लेकिन मैं सिर्फ दो को ही सामने रखूंगा, ये 2 चीज़ के लिए मैंने खुद अपने आप के लिए क्या किया। अगर शुरुआत यहाँ से होती है तो मतलब सही मायने में ये सारी चीज़ें आगे बढ़ सकती है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो हम कर रहे हैं वो देख रहा है। हम अगर सर्वोच्च, उचित और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर उसमें से 5% 10% भी कर लें तो शायद उसका न कि अपने आप को फायदा होगा, हम, लेकिन साथ साथ फैमिली को फायदा होगा, समाज को फायदा होगा, नेक्स्ट जनरेशन को फायदा होगा। धन्यवाद। तो कुछ कहना चाहेंगे? जीतू सर कुछ कहना थे। जीतू Out of all the discussions, what I felt was, perhaps, it's about the end justifying the means, or the means justifying the end. If I can just elaborate on this one. In the Treta Yuga, when Sri Ram was, here, so how you did things mattered more. Okay. So the means justified the end. But perhaps when Sri Krishna was here, the end justified the means. But in Ram's time also, the incidents of Wali, the end justified the means he took, isn't it? That's how he justifies it, correct? So those incidents where the end justifies the means, and therefore the means can be this, not exactly the prescribed means, would be very few incidences. But during Krishna's time, it became the other way. The end entirely justified the means. You could take any means, but the end was important. End justified it. So how you looked at it and what was the end you wanted to achieve, to deliver justice, the means were okay to take. And as we progress into this view, it gets worse and worse. Okay, so finally what end you have in mind, means are all available. You take whatever means. But if your end is really justified and good, then I guess every politician has to employ any means to get there. But finally, if he delivers for the people, then that's great, no? That's what I want to say. Okay, thank you. Yeah, sorry, my knowledge is not very vast here. It's very limited, but still would like to add something here. In current generation, if we correlate these things, so I would say if like the king is not righteous, and then forget about like personally the praja, if they are crooked or not, okay, so but he suppose that king who is supposed to become a king, okay, if he is born into that family who has to be a king after the current one, okay, and he is not righteous, then I think we'll end up with a dictator, something today we called North Korea. So that's the one thing. And second, if suppose as Dad was saying, so if the king is righteous, then the praja automatically becomes good. So I can just correlate like today, if in an organization upper management is good, then the engineers and workers do stick to the company and they are loyal and happy. That's 2 things I wanted to add. Thank you.
नहीं, I think that's fine. लक्ष्मीबाई होलकर के राज्य में भी राम राज्य ही चल रहा था. रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, कलयुग की बात है. लक्ष्मीबाई होलकर वन ऑफ द बेस्ट रूरल इन कलियुगा, और अभी वो मतलब 500-600 साल के अंदर की बात है. राम राज्य अगर आप भलते ही कवि की कल्पना मानते होंगे तो भी शिवाजी, लक्ष्मीबाई होलकर ये हमारे सामने के उदाहरण हैं जिनके लिए स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं. थैंक यू. ओनली लास्ट एक इंसिडेंस शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज ये जो डिस्कशन चला है एंड इन्होंने जो मैं 2 एग्जांपल दूंगा एंड रियल एग्जांपल है, एंड यू विल सी कि व्हाट प्रॉब्लम वी हैव इन इंडिया एक्चुअली. I was sitting next to my son in the Canada, and he was driving in the night at 11 o'clock, and without any signal light he stopped, and I asked him, why you stopped? यहाँ तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा सब कुछ नहीं है. कि नहीं पापा, यहाँ पे एक वाइट लाइन है और जहाँ पे हमको रुकना पड़ता है 1 सेकंड के लिए और फिर आगे बढ़ना पड़ता है. मैं कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है. हमारे यहाँ तो रेड लाइट देख के भी नहीं रुकते है ना, मतलब रेड लाइट देख के भी नहीं रुकते हैं. Second incident, my daughter lives in Dubai, okay, and she was driving with 160, 150, and I was sitting beside her. So suddenly she slowed down without any, कोई ऐसा नहीं था ट्रैफिक स्लो डाउन होना चाहिए. तो मैंने पूछा, बेटा क्या हो गया, क्यों स्लो डाउन किया? नहीं पापा, यहाँ कैमरे होते हैं. ठीक है, तो एक जगह समझ थी, एक जगह डर था, है ना. तो राम राज्य के लिए समझ या डर, कुछ तो करना पड़ेगा. हमारे यहाँ न समझ है और न डर है. सो विद दैट फ्रेंड्स, आज की शाम बहुत ही अच्छी, और सब लोगों ने ऑनरेबल पातुरकर जी से उनका जो विचार है, उनके सारे विचार राम राज्य के ऊपर सुने. उसके ऊपर सब लोगों ने चर्चा में सहभाग लिया और अपने अपने शंकाओं का तुष्टिकरण करने का प्रयास भी किया. किसी की शंका है, शंकाओं का तुष्टिकरण हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा. इसके ऊपर चिंतन मनन की तो भविष्य में भी आवश्यकता है. आज का प्रोग्राम अभी ख़त्म करने के पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय लोंढे जी का, माननीय पातुरकर जी का, जिन्होंने अपना समय देके हम लोगों को एनलाइटन करने के लिए यहाँ आए. मैं चिटनवीस सेंटर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें ये जगह उपलब्ध कराई है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, everybody who has spent their time for this occasion, and our staff who without any expectations is working for the Shastrartha. It is their contribution to take this entire journey up in the air and for the knowledge of other people. So my sincere thanks to everybody, and thank you very much.